Assalamu alaikum. My name is Aliza Noor and today I'll be presenting the role of fluid mechanics in nuclear power plants. Next slide. एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली किसी भी फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स की वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में। इस प्रेजेंटेशन में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के रोल को हाईलाइट करेंगे न्यूक्लियर फील्ड में, स्पेशली इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट स्लाइड। Next we have the table of contents. इसमें as you can see we have introduction, role of fluid mechanics in nuclear power plants, CFD for nuclear reactors, safety code, pros and cons, then applications, conclusion, and lastly references. Next slide. Next is introduction. Next slide. What is fluid mechanics? फ्लूइड बेसिकली एक स्टेट ऑफ मैटर होती है दैट लीड्स टू शेयरिंग फोर्सेस। नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिक्स जो है अप्लाइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एंड एक्शन ऑफ फोर्सेस से। टुगेदर दे मेक फ्लूइड मैकेनिक्स, जो इन इटसेल्फ एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी करती है मैकेनिक्स ऑफ फ्री मूविंग पार्टिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। What are nuclear power plants? A nuclear power plant और NPP एक थर्मल पावर स्टेशन होता है जिसकी हीट सोर्स जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यूजिंग हीट एंड फ्लूइड एज बेसिक कैटलिस्ट व्हिच किक स्टार्ट देयर रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। Even though there has been some major catastrophes, still nuclear power plants जो हैं they are one of the safest modes of electricity generation. Next slide. न्यूक्लियर प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये एक मैप है जो शो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में अराउंड 99 नोन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, देन फ्रांस जिसमें अराउंड 58 नोन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन है। राइट। Okay, so first nuclear power plants. This is the timeline जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड को शो कर रही है। 1983 से लेके 2011 तक ये टाइमलाइन जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so next we have some important people in the field of nuclear physics. We have Marie Curie जिन्होंने फाउंडेशन ले की थी न्यूक्लियर फिजिक्स की। We have Martin Klaproth जिन्होंने several important radioactive elements जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिस ले करते हैं। एंड लास्टली वी हैव एनरिको फर्मी जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किया था। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is it from me. Now I'm passing over to Hamna and she will continue. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना आरिफ है। जैसा कि अलीज़ा ने आपको इंट्रोडक्शन दिया फ्लूइड मैकेनिक्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट का, अब मैं रोल ऑफ फ्लूइड इन द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट्स बताऊंगी ब्रीफली एंड देन आई विल जंप अप टू द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। The components of nuclear power plant are as follows. एटम रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम रिएक्टर एक क्रूशियल पार्ट है पावर प्लांट का जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर का जिसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है जो कि टरबाइन को चलाने में हेल्प करती है। इनको हीट एक्सचेंजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टर में प्रोड्यूस होने वाली हीट को ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियर पावर के स्टीम सिस्टम में। Water cooling tower, the third component of nuclear power plant is water cooling tower. It is a heat exchanger designed to cool water, जो कि टर्बाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट स्टीम को कूल करने के काम आता है। कंट्रोल रॉड्स, फोर्थ कंपोनेंट जो है वो कंट्रोल रॉड्स हैं। कंट्रोल रॉड पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करता है। इट एक्चुअली कंट्रोल्स द फिजन रिएक्शन फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इट बियॉन्ड कंट्रोल। टर्बाइन, another component of nuclear power plant is a turbine. टर्बाइन जो है वो स्पिन करता है जनरेटर को विद द हेल्प ऑफ स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
लास्ट कंपोनेंट जो है वो कंडेंसर है। कंडेंसर कंडेंस करता है और रिकवर करता है स्टीम को जो टरबाइन में से पास होती है। कंडेंसर उन सब पावर प्लांट में यूज होता है जो स्टीम को एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज करते हैं। अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट हीट वाटर को यूज करता है जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। Nuclear fission reaction takes place in the core of the reactor, which contains uranium fuel. Uranium fuel that is loaded in the core of the nuclear reactor induced nuclear fission. न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बॉइल्ड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है और ये स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को स्पिन करती है। टरबाइन के स्पिन होने की वजह से जो जनरेटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है and then nuclear plant cool down the steam back into water in a separate structure called cooling tower. Means water constantly flow करता है closed loop में जो कि link करता है reactor को heat exchanger से। heat exchanger के अंदर reactor का water अपनी एनर्जी दे देता है cooler water को जो कि दूसरे closed loop में flow कर रहा होता है। ये कूल वाटर दोबारा से यूज होता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए और ये वाटर पॉन्ड्स, रिवर्स और ओशंस से लिया जाता है। Now let's discuss what is the importance of fluid dynamics in a nuclear power plant. बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में फ्लूइड डायनामिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली उन प्रोसेसेस में जिनमें ट्रांसफर ऑफ हीट इन्वॉल्व होती है। स्टीम जनरेटर में हीटेड वाटर सर्कुलेट करता है ट्यूब्स के अंदर जो कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है और ये स्टीम टरबाइन जनरेटर को टर्न करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। फिर वाटर दोबारा से यूज होता है स्टीम को कूल करने के लिए and to turn it back to water. Thank you. Now I'm done. Assalamualaikum, this is Anjala and my subtopic is computation fluid dynamics for nuclear reactors. Next, please. Fluid flow in the nuclear field. Fluid flow in the nuclear field can be complex and is not always subjected to rigorous mathematical analysis. मतलब जो है हम fluid flow को जो है analytical mathematical analysis explain नहीं कर सकते, काफी complex हो जाएगा, इसलिए unlike solids, the particle of fluid move through piping components at different velocities. So हर position पे velocity explain करना analytical method से काफी मुश्किल हो जाएगी. The foundational axioms of fluid dynamics are the conservation laws, especially conservation of mass, which leads to continuity equation, conservation of linear momentum, and conservation of energy, which leads to energy equation. Next, please. CFD for nuclear reactors. In nuclear reactor, heat is generated in the fission process, which is harnessed by transferring it to the fluid. Fission process can be explained by when a neutron hits a larger atom, which emits two other neutrons, which again forms a chain reaction, which produces heat, and it can be transferred to the fluid. And this transfer also maintains the integrity of the fluid. The subject of nuclear reactor heat transfer and thermal hydraulic is crucial as it establishes the relation between the heat generated in fission and its transfer to the coolant. The heat accumulated is the coolant is used for various purposes. This includes power generation, Rankine cycle, propulsion of an engine by providing thrust, and for other heating applications. Next. One of the major goals of the subject is to provide flow and temperature distribution in the components. मतलब reactor में हर position पे हमें temperature और fluid velocity जो है उसको निकालने के लिए हमें CFD की ज़रूरत पड़ती है. The knowledge of thermal hydraulics provides the inputs for a structure design of the nuclear reactor. In view of the above, thermal hydraulic analysis of nuclear reactor plays an important role in designing an efficient, economical, and safe reactor. Next. CFD model development for two-phase flow. Two-phase flow is a kind of flow in which two states of matter
which is liquid and gas, are both accumulated. Two-phase flow involving boiling and condensation are encountered during normal operations, transients, and postulated accident scenarios in water-cooled nuclear reactors. Modeling of these phenomena is thus essential for greater confidence in design and regulation of these reactors. And I'm done here. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Amna Hanif, and my topic in this presentation is safety code for nuclear reactor. Includes coolant mixing in pressurized water reactor for safety. Coolant means coolant is a substance which is used to remove heat from the nuclear reactor core. Next, please. Coolant mixing. Numerical investigation on the coolant mixing is pressurized water reactor have been performed by other institutes and at FZD for more than decades, means fertilized for more than 10 years. The work was described the phenomena, this work described the phenomena of safety analysis of nuclear reactor. Which is the setup of RICTUM. RICTUM, what is RICTUM? RICTUM is a reconfigurable object consistently model for Centurious architecture test facility in which a unique database has been created to use the validation of computational fluid dynamics code for our application to turbulent mixing in nuclear reactor. Next, please. Frequently, a chain of two coolant loops are used because the primary coolant loop takes on short-term radioactivity from the reactor. So that's why we use benchmark problems, which is based on selected experiment, were used to study the effort of different turbulent mixing model used to various flow conditions to investigate the influence of the study, the boundary conditions, the grade, and the time steps in the CFD component fluid dynamics analysis. In doing the calculation, the best perfect guidelines of nuclear reactors is safety calculation has been followed. Next, please. Nuclear accident timeline. The Ukraine went out in 1986. The Ukraine went out of control during the test, low power leading to an explosion and fire that demolished the reactor building and released large amount of radiation in the atmosphere by nuclear reactor, by the explosion of nuclear reactor. And in 1987, the Brazil accident was committed, and it was formed because of the source was stolen. Therapy source was stolen from an abandoned hospital site in city. In 1990, the Japan accident was caused by bringing that together too much uranium की वजह से caused हुआ था, enriched to a relatively high level cost of a limited uncontrolled nuclear chain reaction, जिसकी वजह से nuclear chain reaction हुआ, जिसकी वजह से 20 hours तक उससे explosion of fire रही. Or in 2011 in Japan, this proximate cause of nuclear disaster was the 2011 Tohoku earthquake and tsunami or natural disaster. Earthquake की वजह से हुआ था, जो कि 11 मार्च 2011 में हुआ था जापान में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था. नेक्स्ट प्लीज. A nuclear power plant is infinitely safer than eating.
because 300 people choke to eat food every year, by Dexily Ray. Next, please. I'm done here. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा नुमान और अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस न्यूक्लियर पावर प्लांट के। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट एडवांटेजेस इसका ये है कि ये लो कॉस्ट होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है इतना, और सेकंड ये कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में CFD सिमुलेशन कर सकते हैं हम एग्जीक्यूट। CFD जो है वो अलाउस करता है डिज़ाइनर को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हमें अगर परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम किसके ज़रिए थर्मल एंड फ्लो पैरामीटर्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, जो कि जिसमें यह है कि अगर सिंपल फ्लो मॉडल्स की वजह से और आसान बाउंड्री जो भी कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से हमारे पास एरर आ सकता है। फिर उस सेकंड ये है कि ये पर सेल वैल्यूज के हिसाब से कंप्यूटिंग करता है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को कंप्यूट करता है, इस वजह से रिजल्टिंग में इंटरपोलेशन एरर आ सकता है और टाइम भी बढ़ सकता है अगर लार्ज मोड हो तो। नेक्स्ट स्लाइड। ये ग्राफ है जो प्लांट टाइप के हिसाब से रिप्रेजेंट हुआ है, जिसमें हर प्लांट के हिसाब से वाटर की क्वांटिटी डिफाइन की गई है। अब इसमें जो है हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का फर्स्ट पार्ट है, देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ हुआ है, मतलब वाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा बताई गई है। तो हर प्लांट के टाइप से अलग अलग वाटर यूज़ होता है और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के में वाटर यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशंस हैं इसके कुछ, जिसमें हम सी वाटर डेसिलिनेशन और हाइड्रोजन प्रोडक्शन, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड प्रोसेस हीटिंग फॉर इंडस्ट्री और लास्ट रिफाइनिंग एंड सिंथेसिस गैस प्रोडक्शन, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू बताई गई है कि एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 85 किलोवाट आवर। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ फैक्ट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इन 2020 790 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और सेकंड लो कार्बन जनरेट हुआ है और सेकंड लार्जेस्ट सोर्स कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी, और ये रिलायबल एनर्जी सोर्स है वर्ल्ड। न्यूक्लियर एनर्जी इज इन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। सेफ्टी सेफगार्डिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब इसमें फर्स्ट सेफ्टी, इसमें अनइंटेंडेड कंडीशंस होती हैं जिसमें पे फोकस किया जाता है फर्स्ट सेफ्टी में, जिसमें रेडियोलॉजिकल रिलीजेस हो सकती हैं। नंबर सेकंड सेफगार्डिंग है, जिसमें जो है जो भी एक्टिविटीज होती हैं स्टेट्स की या उनको रोकने की तरफ फोकस करता है, जिसके बायस हमें डेवलपमेंट हो सकती है न्यूक्लियर वेपन्स की। सिक्योरिटी, जिसमें मिसयूज हो सकता है, इंटरनेशनली कोई भी मिसयूज कर सकता है इसका, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है सिक्योरिटी में। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन, हमने इस प्रेजेंटेशन में हमारा यही मेन पर्पस था कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज हो रही है उसको क्या रोल प्ले कर रही है वो हम इसमें बता सकें, और हमने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन से वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट और CFD ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए हमने इस प्रेजेंटेशन में मेन पर्पस हाईलाइट्स करने की कोशिश की है जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जरिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये रेलिवेंट रेफरेंसेस है जहाँ से हमने मटेरियल लिया है अपना। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नाउ लास्टली ग्रुप मेंबर्स, हम मेंबर्स फर्स्ट अलीजा नूर, फातिमा नुमान, अमना आरिफ, आमना हनीफ एंड मोहम्मद हंसला। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।